So good evening everyone. Hope you all are doing well in your examinations. So today we're going to discuss the topic of MCS 224. We have solved the question for June 2023 and few more important questions. And these questions are very important from the examination point of view. And the course is vast. You all know. Okay, the thing is that yeah, maximum questions are theory, but unless you know the practical side of the theory, okay, you cannot solve these questions. I'm telling you. That means you should go through each and every that study material, each and every block, and then only you can solve these questions. But do not worry, I tried to I will try to solve this question in a simple and easiest manner, so that you all can crack the examination very well. That's my main motive, my intention. That's my intention. That's all. Without any further delay, we'll start this topic MCS 22. But before that, let me tell you one thing. Because you all are in third semester, so I would tell you that you all should join one workshop that I am going to I am conducting in Jan 20th and 21st at 7 a.m. to 7 p.m. to 9 p.m. You all must join, because this is very important, because this is your third semester. In fourth semester, you are having a project also. Major project, dissertation. Okay, so if you take this lecture, this workshop, so yeah, you can make project on this also. There are various things that you can implement in this topic, in this Power BI, and you can make a project. You do not have to pay anything to anybody. Just what you have to do, you have to you can make your project on your own. Rest I can help you also if any help is required, but you can do it on your own, because these days a library management or the school management इस तरह का project में 0 marks मिलते हैं. 300 mark की project है आपकी. Keep in mind. 300 मार्क्स की प्रोजेक्ट है. यदि 300 आप लोग स्कूल मैनेजमेंट या कोई भी कहीं से भी, इफ यू बाय प्रोजेक्ट एंड यू गिव इट, यू विल गेट 40% और 45%, तो उससे क्या होगा, ड्रास्टिकली योर परसेंटेज विल डिक्रीज. अंडरस्टूड. तो ओवरऑल परसेंटेज विल डिक्रीज, तो डू नॉट बाय दैट. ठीक है, इंस्टेड यू शुड जॉइन दिस वर्कशॉप दैट आई एम गोइंग टू कंडक्ट एवरी ईयर. आई कंडक्ट द वर्कशॉप इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी, so you all must join that. Okay, and yeah, you will at least you will learn something from there. And yeah, if you complete this workshop, so you'll get a certificate also. You can upload that certificate in LinkedIn. My LinkedIn profile is there. We are also associated with few startup companies, AI companies. Lots of companies are there, but it is all related to AI, because I am also working in this field. So all of you, if you are interested in the if you are interested in AI, then you can join that workshop. Okay, that's all. So let's start the first question. Compare descriptive, predictive, prescriptive analytics in machine learning. Okay, descriptive, predictive, prescriptive. Okay, okay. Now let's start. What is descriptive? Let us understand. Let me change the sheet first. Okay. Now, what is descriptive, predictive, and prescriptive analytics? These are the three levels of analytics: descriptive, predictive, and prescriptive are the three levels. Of analytics. Are the three levels of analytics. अब descriptive में क्या होता है? Descriptive. Okay, descriptive. Descriptive analytics focuses on summarizing and presenting historical data. Okay, it is descriptive data क्या होते हैं? Descriptive data focuses on summarizing, जैसे mean median mode, summarizing and presenting historical data, and presenting historical data, and presenting historical data to understand what has happened in the past. What has happened in the past. Okay, जैसे एग्जांपल ले लो, एक देयर इज अ ट्रेन.
keep in mind there is a train that comes at 7 a.m. every day, 7 a.m. every day. अब क्या हो रहा है, पास डेटा मैं ले रहा हूँ, 7 a.m. इज द करेक्ट टाइम जिसमें उस टाइम में वो, या एक टेक ए पर्सन, ठीक है, टेक ए पर्सन हु सेल्स वेजिटेबल, टेक ए ट्रेन, ट्रेन विल बी बेटर, 7 a.m. में आते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कभी वो 2 मिनट 2 घंटा लेट, 2 hours लेट, कभी वो 3 hours लेट, कभी 5 hours लेट, ट्रेन, ओके। इट कम्स एट 7 a.m. 7 a.m. क्या होता है, करेक्ट टाइम, ओके। 2 hours लेट, कभी 1 hour लेट, कभी 4 hours लेट, ऐसे करके आते हैं वो ट्रेन, ओके। कभी 0 hours लेट, कभी कभी करेक्ट टाइम पे भी आते हैं समटाइम्स। तो जैसे इफ आई फाइंड द एवरेज ऑफ दिस, 5 + 3 8 + 2 10 + 1 11 + 4 is 15, 15 hours, तो 15 1 2 3 4 5 6 by 6 25 2.5, माने हम उससे क्या पता चलेगा, जब 2.5 घंटा अप्रोक्सीमेटली इट कम्स 2.5 hours लेट एवरी डे, दैट वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम द हिस्टोरिकल डाटा। तो दिस इज डिस्क्रिप्टिव, इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव, अंडरस्टूड। इससे क्या पता चला, 2.5 आवर्स वो लेट होते हैं, एवरेज में वो 2.5 आवर्स एवरी डे लेट हो सकते हैं, ठीक है, इट्स लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। आप इसमें कौन कौन से मेथड्स यूज करेंगे, मेथड्स, मेथड्स क्या क्या यूज करेंगे, मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड and standard deviation. SD stands for standard deviation. Understood? Data visualization techniques. डेटा विजुअलाइजेशन, जैसे बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये सब चीजें हम यूज करते हैं, ठीक है, ये डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट कैन आल्सो बी टेकन, डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन, ZATION, डेटा विजुअलाइजेशन, सी द स्पेलिंग, आई डिड अ मिस्टेक इन स्पेलिंग, प्लीज वेट, डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, data which is such as mean, data which is like charts, graphs, like charts, graphs, and dashboards, common techniques, understood। अब ये जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, डिस्क्रिप्टिव दैट वी आर, जिसके बारे में बात करें इन कंसेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है, जब पावर बीआई है ना, दिस इज एक्चुअली, यदि कोई एप्लीकेशन की बात करें तो पावर बीआई इज एन एप्लीकेशन दैट वी आर गोइंग टू, पावर बीआई, दैट वी आर गोइंग टू हैव ए वर्कशॉप, पावर बीआई डिस्क्रिप्टिव के लिए हम पावर बीआई यूज करेंगे। इज इट क्लियर? नंबर 2 इज प्रेडिक्टिव एनालिसिस, नंबर 2 इज प्रेडिक्टिव एनालिसिस। प्रेडिक्टिव, प्रेडिक्ट करने के लिए, प्रेडिक्टिव मतलब प्रेडिक्टिव एनालिसिस, प्रेडिक्ट करने के लिए। इसमें क्या होता है, it is concerned with, it is concerned with forecasting, with forecasting, with forecasting future trends, future trends और outcomes, outcomes, फ्यूचर ट्रेंड्स और आउटकम्स के लिए ये यूज करते हैं, अंडरस्टूड। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, ये भी हिस्टोरिकल डेटा से ही होते हैं, अंडरस्टूड, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। जैसे एग्जांपल ले लो, ये जिसे 2.5 घंटा लेट होता है ये ट्रेन, ठीक है, सपोज ये मैंने पता किया 2.5 घंटा अप्रोक्सीमेटली लेट होते हैं, सपोज आई वुड गो समवेयर विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रेन, तो मैं क्या इस ट्रेन को मीन्स आई वुड प्रेफर दिस ट्रेन, आई वोंट प्रेफर दिस ट्रेन, इतना लेट होता तो और भी लेट हो सकते हैं, जल्दी आ गया तो दैट इज माई बोनस, लेकिन यदि लेट हुआ तो इट कैन बी सपोज आई वांट टू बी ऑन टाइम, तो मैं इस ट्रेन को मैं नहीं लूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस ट्रेन, अंडरस्टूड। तो क्या हो गया इससे, फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स वी अंडरस्टूड दैट इट कैन बी लेट अगेन, ओके, तो प्रेडिक्ट किया मैंने, दैट इज इसका फोरकास्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स और आउटकम्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, अंडरस्टूड। तो इसके लिए मेथड्स कौन कौन से यूज करेंगे, एक करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस, एक रिग्रेशन एनालिसिस, एक टाइम सीरीज एनालिसिस, जो आप बिजनेस में यूज करते हैं, टाइम सीरीज,
time series analysis and classification algorithm, algo, are employed, are used, you can say, are used to build predictive models, predictive models. Okay, अब एग्जांपल ले लो predictive model के, एक predicting stock prices, predicting stock prices, customer churn, तो कौन कस्टमर के मीन्स मिडिल क्लास कस्टमर है या हाई क्लास कस्टमर है, क्या है, दैट आल्सो आर फ्यूचर सेल्स, और फ्यूचर सेल्स based on historical data, all are based on historical data. Is it clear? बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा. अब एक है प्रिस्क्रिप्टिव, माने प्रिस्क्राइब करेगा. अंडरस्टूड. जैसे मूवी आपने एक एक नेटफ्लिक्स या अमेजन में आपने एक मूवी देखे, कॉमेडी मूवी, तो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू ओपन दैट ऐप ना, दैट नेटफ्लिक्स, तो इट विल प्रिस्क्राइब यू, ये मूवी आप देख लो, ये यू टेक दिस मूवी, यू सी दिस मूवी, यू वॉच दिस मूवीज, पीपल हु वॉच दिस मूवी आल्सो वॉच दिस मूवी, इन दिस टाइप ऑफ रिकमेंडेशंस होते हैं प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में. प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. Prescriptive analytics. It goes beyond predicting future outcome. It recommends actions. It recommends actions. जैसे आप you must have seen in Amazon also, in Flipkart also, if you are buying something, तो it will say the customer who bought this thing also bought this thing. इस तरह का बोलते नहीं है, तो ये होगा prescriptive analytics. Understood? Yeah, it recommends actions to optimize or take advantage of a predictive scenario, or take advantage of a predictive scenario. Predicted you can say, predicted scenario. जो प्रेडिक्ट किया उसके बाद क्या करें, प्रेडिक्ट करने के बाद ही प्रेस्क्रिप्टिव आते हैं, प्रेडिक्टेड सिनेरियो. तो सिंपल ये क्या होता है, इट इज फॉर रिकमेंडेशन, स्पेशली इट इज यूज्ड फॉर रिकमेंडेशंस. अब मेथड्स, कौन कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, मेथड्स वी यूज जैसे ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स, एंड डिसीजन मेकिंग मॉडल्स, and decision making models are used to generate recommendation, are used to generate recommendation. Okay, और एग्जांपल ले लो, मीन्स recommends, Netflix recommends movies based on the watching history, अंडरस्टूड. तो ये इस तरह के ये हो गया प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. अंडरस्टूड. तो दैट्स ऑल. तो क्लियर हो गए. नाउ विल गो विथ मीन मैक्स स्ट्रेटेजी. व्हाट इज मीन मैक्स स्ट्रेटेजी? राइट मीन मैक्स एल्गोरिथम. मीन मैक्स स्ट्रेटेजी मैंने ऑलरेडी आपको एक लेक्चर प्रोवाइड किया हुआ, उससे आप मीन मैक्स स्ट्रेटेजी पूरा देख लीजिए. व्हाट इज मीन मैक्स स्ट्रेटेजी? ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस द मिनीमैक्स एल्गोरिथम. मिनीमैक्स मतलब क्या, मिनिमम, और मैक्स मतलब मैक्सिमम. ओके, तो इसके लिए क्या होंगे, आई एम राइटिंग जस्ट द एल्गोरिथम नाउ. ये मिनीमैक्स स्ट्रेटेजी क्या होता है? इट इज अ डिसीजन मेकिंग एल्गोरिथम, यू कैन से. मिनमैक्स स्ट्रेटेजी, it is a decision making algorithm. It is a decision making algorithm
used in two-player games. Used in two-player games such as chess, checkers, and tic-tac-toe. And tic-tac-toe. It's a recursive algorithm. Okay, it's a recursive algorithm. The goal क्या है? The goal is to minimize the possible loss. इसमें गोल क्या होता है? The goal is to minimize the possible loss. Minimize the possible loss for a worst case scenario. For a worst case scenario. अब चलो मैं इसका एल्गोरिथम लिख लेते. फंक्शन min max, minimax, function minimax, node, comma depth, comma maximizing player. Maximizing player. If depth is 0, तो रूट नोड हो जाएगा डेप्थ 0 होने से. इफ डेप्थ इज 0, इज डेप्थ इज 0, और node is a terminal node, or node is a terminal. Terminal node. Then क्या होगा? Return the heuristic value of node. जो नोड का जो वैल्यू होगा उसको रिटर्न कर दो. जैसे डेप्थ मतलब वो खत्म हो गया, उसमें कुछ है ही नहीं. ये सिंपल ये हो गया. इसके बाद ये सब कुछ है ही नहीं, जस्ट ये रूट है. दैट मीन्स क्या होगा? वो रूट का जो वैल्यू है वही रिटर्न कर दो. सिंपल. Return the heuristic value of the node. The heuristic value of the node. Okay. If maximizing player, maximizing player के लिए क्या होता है? डू यू नो? मैक्सिमाइज जो प्लेयर, जैसे अल्फा बीटा प्रूनिंग में क्या कहते हैं? मैक्स के लिए क्या कहते हैं? माइनस इन्फिनिटी कहते हैं. मीन के लिए प्लस इन्फिनिटी कहते हैं. यहाँ भी सेम है. इफ मैक्सिमाइजिंग प्लेयर बेस्ट वैल्यू इक्वल टू बेस्ट वैल्यू इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी. सिंपल. नेगेटिव इन्फिनिटी वो कर लो. फॉर ईच चाइल्ड इन नोड, वैल्यू इक्वल टू मिनीमैक्स. वैल्यू इक्वल टू मिनीमैक्स लगा दिए. चाइल्ड डेप्थ जो था, डेप्थ उसका एक ऊपर जाएगा. जो डेप्थ था सपोज ऐसे करके है, तो ये जब सॉल्व हो जाएगा तो फिर क्या होगा? डेप्थ ऊपर जाएगा ना. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. चाइल्ड कॉमा डेप्थ -1, डेप्थ -1 कॉमा फॉल्स. ओके. डेप्थ -1 यदि कुछ वैल्यू मिल गया तो फिर क्या होगा? फॉल्स हो गया. उसके बाद इससे क्या करेगा? ट्रू होगा तो चलते जाएगा. बेस्ट वैल्यू इक्वल टू मैक्स. दोनों के मैक्सिमम देखेंगे. मैक्स किसके देखेंगे? बेस्ट वैल्यू. ये बेस्ट वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है. बेस्ट वैल्यू कॉमा वैल्यू, जो वैल्यू अभी मिला है मुझे. अंडरस्टूड. दोनों में कंपेयर करेंगे. जो मैक्सिमम होगा वो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे बेस्ट वैल्यू में. अंडरस्टूड. नाउ रिटर्न बेस्ट वैल्यू. इज इट क्लियर? एल्स, दिस इज द इफ पार्ट ना. दिस इज द इफ पार्ट. तो ऐसे करके एक एल्स पार्ट आएगा. लेट मी टेक वन मोर शीट. एल्स. एल्स मतलब कहां से एल्स हो रहा?
इस इफ का एल्स है ये, अंडरस्टूड। एल्स बेस्ट वैल्यू क्या होगा, यदि मैक्सिमाइज हो गया तो ये हो गया, मिनिमाइज हो गया तो बेस्ट वैल्यू इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी for each child in node, for each child in node value equal to minimax child comma depth minus 1, डेप्थ तो मीन चाइल्ड और मैक्स चाइल्ड, डेप्थ तो ऊपर जाएगा ही ना, दैट्स द थिंग। ट्रू, ट्रू, अंडरस्टूड। क्या हुआ, मीन ये मिनिमम निकालना, व्हाट इज सेड, व्हाट वी हैव सेड गोइंग टू मिनिमाइज द पॉसिबल लॉस, मिनिमाइज द पॉसिबल लॉस। तो मैक्स के लिए क्या होगा, फॉल्स होगा, और मीन के लिए ट्रू होगा, अंडरस्टूड। अब बेस्ट वैल्यू इक्वल टू बेस्ट वैल्यू इक्वल टू मीन कॉमा बेस्ट वैल्यू कॉमा वैल्यू रिटर्न बेस्ट वैल्यू, रिटर्न बेस्ट वैल्यू, रिटर्न बेस्ट वैल्यू। ओके, अब कॉल कैसे होगा, कॉलिंग कैसे होगा, कॉलिंग द कॉल यू कैन से इनिशियल कॉल कैसे होगा, दैट आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर। मिनिमैक्स रूट कॉमा डेप्थ कॉमा ट्रू, ये करके हम पास करेंगे, ऐसे करके हम कॉल करेंगे, अंडरस्टूड। एंड द होल एल्गोरिथम विल गो लाइक दिस, द वे आई सेड, अंडरस्टूड। तो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू राइट दिस थिंग। डेप्थ क्या होता है, नोड क्या होता है, नोड इज द करंट स्टेट ऑफ द गेम। नोड क्या होता है, लिख देता हूं, नोड represents the current state of the game, the current state of the game, okay, current state of the game। डेप्थ क्या है, द करंट डेप्थ ऑफ द गेम ट्री। डेप्थ क्या होता है, डेप्थ इज द करंट डेप्थ of the game tree, of the game tree, of the game tree। One sec please। current depth of the game tree। अब मैक्सिमाइजिंग प्लेयर इज ए बुलियन फ्लैग, ट्रू या फॉल्स इसके लिए होते हैं। मैक्सिमाइजिंग प्लेयर इज ए बुलियन फ्लैग, इज अ बुलियन फ्लैग। सबका मीनिंग मैंने बता दिया यहाँ पे। बुलियन फ्लैग मतलब जीरो मतलब ट्रू होता है, वन मतलब फॉल्स होता है, दैट्स द थिंग। इज ए बुलियन फ्लैग indicating the current whether the current player is whether the current player is whether the current player is trying to maximize is trying to maximize is trying to maximize मैक्सिमाइज मतलब ट्रू होता है, और मिनिमाइज false the heuristic, false minimize the heuristic value, सिंपल। ये एल्गो यदि आपको क्लियर हो गया तो एल्गो के बारे में थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर देना, दैट्स ऑल, अंडरस्टूड।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन इन्फॉर्म्ड सर्च एंड अनइन्फॉर्म्ड सर्च, नेम वन एल्गोरिथम इच। अब इन्फॉर्म्ड सर्च है क्या, अनइन्फॉर्म्ड, सिंपल इस डेफिनेशन से क्या, इससे क्या समझ, इन्फॉर्म मतलब क्या, इन्फॉर्मेशन दे देना, अनइन्फॉर्म मतलब मुझे पता नहीं है, वी डू नॉट नो एनीथिंग इन द इन द कमिंग, वी डू नॉट नो एनीथिंग, हमें कुछ नहीं पता, अनइन्फॉर्म्ड, अचानक कुछ समथिंग इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तो दैट इज अनइन्फॉर्म्ड। और इन्फॉर्म्ड मतलब क्या, आई नो दैट इट विल कम, ओके, आई नो दैट विल कम, we have the information, we have the future information। और अनइन्फॉर्म्ड में क्या था, we do not have the future information, that's the thing, understood? There's a differentiate between informed search and uninformed search, name one algorithm of each। तो लेट्स सी द अनइन्फॉर्म्ड, व्हाट इज अनइन्फॉर्म्ड सर्च, इसको ब्लाइंड सर्च भी बोलते हैं, अनइन्फॉर्म्ड सर्च को क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सर्च, अनइन्फॉर्म्ड सर्च, इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सर्च। ब्लाइंड सर्च, इसको ब्लाइंड सर्च भी बोलते हैं, ओके। मेक्स डिसीजंस, मेक्स डिसीजंस without considering any specific information, without considering any specific information, without considering any specific information about the problem, about the problem, about the problem, please wait for a second, please। तो इन्फॉर्म सर्च क्या है, मेक डिसीजंस विदाउट कंसिडरिंग एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम, दैट इज अनइन्फॉर्म्ड सर्च, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लाइंड सर्च। And what are the characteristics of this algorithm? This algorithm explores the search space systematically. These algorithms explore the search tree, explore the search tree, explore the search space, search tree नहीं, search space जो space है, systematically, often using, एग्जाम्पल ले लो इस ऐसे एल्गोरिथम की, जैसे BFS, बेस्ट फर्स्ट सर्च, ब्रेड फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, DFS, these are all uninformed search एग्जाम्पल। इज इट क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे इन्फॉर्म्ड सर्च की। नंबर 2 इज इन्फॉर्म्ड सर्च। इन्फॉर्म्ड सर्च
यहाँ पे क्या होता है, these algorithm use additional information about the problem. ओके, इन्फॉर्म मतलब पहले से पता है, इसको बोलते हैं ह्यूरिस्टिक सर्च. फर्स्ट लेट मी राइट इट, ह्यूरिस्टिक सर्च. ह्यूरिस्टिक्स. तो use these algorithms use additional information use additional information about the problem about the problem to make more informed decision, to make more informed decisions to make more informed decisions about the next step, इसको क्या बोलते हैं, informed decision. These algorithms make use of a heuristic function. ये क्या करते हैं, they use this algorithm make use of heuristic function make use of heuristic function that provide an estimate of the cost, that provide an estimate of the cost, then provide an estimate of the cost of different paths in the search space, of different paths in the search space, ओके. वो एस्टिमेट कर लेगा अलग अलग पाथ में, जैसे यू टेक दैट जीपीएस कनेक्शन, कि कौन सा रूट से जाने से वी कैन ट्रैवल फास्ट, और कौन सा रूट से जाने से इट विल टेक टाइम, रेड मार्क है, किसी में ब्लू है, तो वी कैन सी एंड वी कैन डिसाइड. तो ये यू कैन से दैट वन इज द इन्फॉर्म्ड सर्च. जैसे यू आर गोइंग फ्रॉम प्लेसेस, फ्रॉम करोल बाग यू आर गोइंग टू साउथ दिल्ली, ओके. तो you will get different routes, okay, and which route is taking more time, which route is taking less time, so you can get informed, you are already informed about it. तो उसको बोलते हैं informed search. तो इसके एग्जाम्पल यदि you can take, it is example if you take A star search algorithm, ये भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है, you can see over there. Clear? Now next question is describe the modus ponens and modus tollens as propositional rules of inference. Modus ponens क्या होता है? Modus ponens is a valid rule of inference in propositional logic. ये क्या होता है, इसमें if then statement यूज होते हैं और कुछ स्टेटमेंट ट्रू होते हैं और उससे हमें कुछ रिजल्ट में आना होता है. जैसे एग्जांपल ले लो, मैं मोडस पोनेन की बात कर रहा हूं. पहले मोडस पोनेन, इफ P is true, इफ नहीं, सॉरी, मैं प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन करता हूं. सपोज दिया हुआ है P, ओके, और P इंप्लाइज Q दिया हुआ है, तो इससे रिजल्ट क्या हो गया, Q. इसका मतलब मैं क्लियर कर रहा हूं अभी, डू नॉट वरी. ये दोनों स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ये दोनों का स्टेटमेंट मतलब ट्रू है. अंडरस्टूड? ओके, एंड दिस इज द रिजल्ट. ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं. P इक्वल टू I am watching, I watched a movie. Okay. RP implies ये इसके स्टेटमेंट. एग्जांपल, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, दिस इज एन एग्जांपल. ओके, इफ I watch movie, I will miss school. Okay, these are true. P I यहाँ पे Q मतलब क्या है, this one, this is P, and ये जो पार्ट है ये क्या है, ये this one is Q. यहाँ पे क्या Q क्या है, रिजल्ट. तो इसका मतलब क्या है, if I watch a movie, I will miss the school. Q क्या है, I miss the school. तो हाँ, watch a movie तो ट्रू है, ट्रू है, तो रिजल्ट क्या होगा, I will miss the school. तो that's the thing. मोडस पोनेन क्लियर हो गए.
क्या है ये जो दिया हुआ है, these are the statements that are true. These are the statements that are true and this one is the result. Okay, P को मैंने ले लिया, I watched a movie. Q को ले लिया, I will miss the school. अब P implies Q मतलब क्या होता है? If I watch a movie, if then statement है. This one is if then statement. ये भी पता है आपको? If then statement है. If I watch a movie, I will miss the school. Q क्या है? I will miss the, I will watch Q. I will miss school. Okay. Now if I watch the movie, I will miss school. और रिजल्ट में आउटपुट में क्या है? Q. Q is the result. तो Q क्या है? I will miss school. This is true. तो this is, इसको क्या बोलते हैं? मोडस पोनेंट. अब हम लोग बात करेंगे मोडस टोलेन. मोडस टोलेन इसमें क्या है? ये दे दे P implies Q मतलब क्या है? if P then Q है. ओके, नॉट Q. नॉट Q तो यहाँ पे क्या होगा? नॉट P. रिजल्ट क्या? नॉट P. ओके, देखते हैं एक और एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, या ये वाला भी ले सकते हैं या दूसरा. मैं ये दूसरा ले रहा हूँ. P को ले लो. इट इज रेनिंग. इट इज रेनिंग. Q को ले लो. द ग्राउंड इज वेट. Q को ले लो. द ग्राउंड इज वेट. द ग्राउंड इज वेट. ओके, अब क्या है? आप देखते हैं P इज इट इज रेनिंग. Q द ग्राउंड इज वेट. अब यहाँ पे दिया क्या है? इसका मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब है इफ इट इज रेनिंग, if it is raining then the ground is wet. Ground is wet. ओके, यहाँ पे नॉट Q. नॉट Q मतलब क्या? नॉट Q मतलब द ग्राउंड इज नॉट वेट. इसका मतलब क्या? द ग्राउंड इज नॉट वेट. आउटपुट क्या? नॉट P मतलब क्या है? इट इज नॉट रेनिंग. ठीक है ना? ट्रू है ये. इट इज नॉट रेनिंग. So this is the way. P implies Q, not Q, not P. Understood? So this is modus tollens. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. होप आप लोग को क्लियर हो रहे कॉन्सेप्ट्स. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एनसेम्बल लर्निंग. एनसेम्बल लर्निंग. अब एनसेम्बल क्या है? इट इज अ मशीन लर्निंग टेक्निक. इट इज अ मशीन लर्निंग टेक्निक. इट इज अ मशीन लर्निंग टेक्निक. Technique where multiple models are combined, where multiple models are combined, where multiple models are combined to improve overall performance, to improve overall performance, to improve overall performance and predictive accuracy and predictive accuracy. तो क्या है? इट इज मशीन लर्निंग टेक्निक और मल्टीपल मॉडल्स, अलग अलग मॉडल को कंबाइन किया जाता है टू इम्प्रूव द सॉरी इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी. आइडिया क्या है? अलग अलग मॉडल्स है. एवरी मॉडल इज प्रेडिक्टिंग समथिंग. ओके, सबकी प्रेडिक्शन का आउटपुट ले लेंगे. आउटपुट लेने के बाद व्हाट विल डू? विल एवरेज इट. विल एवरेज इट या वी कैन डू वोटिंग ऑल्सो. वोटिंग में क्या होगा? जो एक माने 10 machines are there. 6 models are saying the different answer. 6 models are saying the same answer and 4 models are saying the different answer. But तो which one we will take? छह लोग जो सेम आंसर बोल रहे हैं उसी को हम 6 लोगों का लूंगे ना, तो दैट इज वोटिंग. तो वो प्रोसीजर हम अप्लाई करते हैं. दैट इज द वे. द आइडिया क्या? द आइडिया इज टू एग्रीगेट. द आइडिया इज टू aggregate. The idea is to aggregate the predictions of several models okay,
cell models. Okay, cell models. The result, it achieves better results than any individual model. It achieves better results than any individual model. Than any individual model. Understood? और ए ensemble learning जो मेथड है इसकी एक एग्जांपल ले लो. If you want to take an example, random forest क्या होते हैं? ट्रीज है. तो अलग अलग डिसीजन ट्री लेंगे, उसके सारे आउटपुट्स निकालेंगे. ठीक है, तो अलग अलग आउटपुट और वी एग्रीगेट इट एंड वी गेट द रिजल्ट. सिंपल. इसमें क्या होता है? फॉर रैंडम फॉरेस्ट में क्या होता है? इट इज एन ensemble of it is an ensemble of different decision trees different decision trees where each tree is constructed, where each tree is constructed using a random subset of features, using a random subset of features, random subset of features, using a random subset of features and a random subset of data, and a random subset of data. जैसे एक डेटा सेट ले लो. लेट मी टेक एन एग्जांपल. ओके, एक डेटा सेट ले लो जिसके फीचर्स है, ए ले लो, ए बी सी डी डॉट 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 ऐसे करके दे दिया. ए बी बी ऐसे करके बहुत सारे फीचर है. डॉट डॉट डॉट. ठीक है, दीज आर द फीचर्स. और यहाँ पे क्या होगा? आप लोगों ने एक्सेल फाइल देखा, कितना डेटा होते हैं, कितने फीचर्स होते हैं, कितने कॉलम्स होते हैं. दीज आर थिंग. कॉलम्स, फीचर्स को कॉलम्स भी बोल सकते हैं, फीचर्स को कॉलम्स भी बोल सकते हैं. कॉलम्स. अब यहाँ पे क्या है? ये सारे में डेटा है, ये सारे में डेटा है, ये सारे में डेटा है. अब हम क्या कर रहे हैं? रैंडम सबसेट ऑफ एक डिसीजन ट्री ले रहे हैं. डिसीजन ट्री 1, उसमें क्या बोला? रैंडम सबसेट ऑफ फीचर्स. रैंडम सबसेट ऑफ फीचर्स. रैंडम सबसेट ऑफ फीचर मतलब सपोज ए ले लिए, डी ले लिए, ए बी भी ले लिए, ए बी सी ले लिए, ऐसे करके कुछ फीचर ले लिए. डिसीजन ट्री 2, उसमें ले लिए, बी ले लिए, डी ले लिए, ए सी ले लिए, ए डी डी ले लिए. इस तरह का बहुत सारा फीचर्स. इस तरह का हम लेंगे, अलग अलग डेटा लेंगे, रैंडमली लेंगे, सारे रैंडमली, और क्या करेंगे? इसका हम प्रेडिक्ट करेंगे. अंडरस्टूड? एंड आई एम गोइंग टू प्रेडिक्ट द थिंग्स. अंडरस्टूड? तो ऐसे करके हम लेंगे डिसीजन ट्री 1, डिसीजन ट्री 2, ऐसे करके बहुत सारे डिसीजन ट्रीज हम लेंगे. अंडरस्टूड? और फिर क्या करेंगे? वो काम करेगा. देन वी विल कंबाइन ऑल द आउटपुट्स, देन वी विल कंबाइन ऑल द आउटपुट्स and aggregate it and we will find the final prediction. Understood? In this way we are going to do. तो आप फर्स्ट इसमें कुछ चीजें हैं दैट यू शुड नो. नंबर 1 इज बूटस्ट्रैप सैम्पलिंग. बूटस्ट्रैप सैम्पलिंग. बूटस्ट्रैप सैम्पलिंग क्या है? रैंडम सैंपल्स विथ रिप्लेसमेंट. ये यहां पे क्या होता है? क्रिएटिंग रैंडम सैंपल, random sample one sec. Creating bootstrap sampling. Please wait for a second. हाँ, तो creating random samples with replacement. Random sample with replacement. Random sample with replacement. Okay, random sample with replacement from the original data set. From the original
data set. This is known as random bootstrap sampling. Number two, feature randomization. Feature randomization. इसमें क्या होता है, वी आर टेकिंग रैंडम फीचर्स, सबसेट ऑफ फीचर्स इज कंसिडर फॉर स्प्लिटिंग, रैंडम फीचर्स लेते हैं एट ईच नोड ऑफ द डिसीजन ट्री, at each node of the decision tree, at each node of the decision tree, a random subset of features, a random subset of features is considered for splitting. अभी स्प्लिटिंग क्या है, मतलब क्या है, कुछ सम डेटा दैट इज पकड़ लो 80% फॉर ट्रेनिंग, सम डेटा 20% फॉर टेस्टिंग. ओके, तो ऐसे स्प्लिट करते हैं. तो रैंडमाइज्ड फीचर्स क्या होते हैं, रैंडम फीचर्स लेते हैं, सबसेट ऑफ फीचर्स. Then number third is decision tree training. Decision tree training. अब मैं इस ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा डिटेल में जा नहीं रहा हूँ, ठीक है. इट्स अ ह्यूज मैथमेटिक्स. ओके, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट. ओके, यहाँ पे होता क्या है, द ट्रीज आर ट्रेन्ड. वन सेक. The trees are trained. The trees are trained. The trees are trained until a certain depth. Until a certain depth. Until a certain depth, or until they reach a, or until they reach, uh, until they reach a specified stopping criteria. Stopping criteria. मतलब क्या होता है, जब डेटा सेट को ट्रेनिंग करो, जब एक मॉडल को ट्रेन करो तो एक क्राइटेरिया, स्टॉपिंग क्राइटेरिया देने पड़े, अदरवाइज इट विल ट्रेन अगेन अगेन अगेन, वो करते रहेगा. इट्स एन इनफाइनाइट प्रोसेस. तो एक स्टॉपिंग क्राइटेरिया देंगे, इसके बाद हम ट्रेन नहीं करेंगे. 98% जैसे ही मुझे मिल गया, जो 90% 98% एक्यूरेसी है, वी स्टॉप इट ओवर देयर, वी स्टॉप इट. 95% हो गया, वी स्टॉप इट, सिंपल. तो इस तरह के स्टॉपिंग क्राइटेरिया देना होता है. नंबर फोर्थ इज वोटिंग एंड एवरेजिंग. Number fourth is voting or averaging. Fourth, voting or averaging. ओके, वोटिंग और एवरेजिंग आई ऑलरेडी टोल्ड यू. जब जैसे ही सारे ट्रीज को ट्रेड हो जाएंगे, प्रेडिक्शंस आर मेड बाय ईच ट्री एंड द फाइनल प्रेडिक्शन ऑफ द रैंडम फॉरेस्ट इज ऑब्टेन्ड थ्रू ए मेजॉरिटी वोटिंग. वोटिंग किसके लिए होते हैं, फॉर क्लासिफिकेशन. और एवरेजिंग रिग्रेशन के लिए क्या करते हैं, एवरेजिंग करते हैं, सिंपल. लेट मी राइट इट. once all the trees are trained once all the trees are trained once all the trees are trained, predictions are made by each tree. Predictions are made by each tree. And the final prediction and the final prediction and the final prediction of the random forest is obtained of the random forest is obtained through a majority voting through
मेजोरिटी मेजोरिटी वोटिंग थ्रू मेजोरिटी वोटिंग वोटिंग किसके लिए होता है फॉर क्लासिफिकेशन ओके और एवरेजिंग ये किस लिए रिग्रेशन फॉर रिग्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल of the individual tree prediction okay अब रिग्रेशन में क्या होता है न्यूमेरिकल डेटा रिग्रेशन में न्यूमेरिकल डेटा होते हैं न्यूमेरिकल डेटा क्लासिफिकेशन में क्या होता है क्लासिफिकेशन इज नॉट न्यूमेरिकल इट्स यू कैन से जैसे यस नो मेल फीमेल ठीक है दिस टाइप का डेटा जब होंगे तो फिर क्या करेंगे वी विल बी यूजिंग क्लासिफिकेशन वन सेकंड उस डेटा को कुछ बोलते हैं आई फॉरगॉट द नेम लेट मी टेल यू वन सेकंड classification data for उस डेटा को क्या बोलते हैं ओके आई विल टेल यू इन सम टाइम क्लासिफिकेशन के लिए कौन सा डेटा यूज करते हैं विल टेल यू इन सम टाइम एक न्यूमेरिकल डेटा है और दूसरा कौन सा डेटा आई विल टेल यू प्लीज वेट और उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में चलते हैं लेट मी पेपर को ठीक करते हैं Next is draw confusion tree and write formula for accuracy, precision, sensitivity and sensitivity. अब ये जो क्लासिफिकेशन का मैंने बात की है कि क्लासिफिकेशन से कौन सा डेटा ये डेटा को किस टाइप को डेटा है टाइप ऑफ डेटा ये आप लोग देख के प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें व्हाट एवर डेटा इट इज टाइप ऑफ डेटा कौन सी डेटा है ये ओके अब क्या होता है ड्रॉ कंफ्यूजन मैट्रिक्स एंड राइट फार्मूला फॉर एक्यूरेसी प्रेसिजन सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी अब ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स है क्या अब confusion matrix is a table. It is a table is often used to describe the performance of a classification algorithm. Confusion matrix क्या है? It is a table. It is a table. It is a table used to describe used to describe used to describe the performance of a classification algorithm. The performance of a classification algorithm. Performance of a classification algorithm on a set of data. On a set of data. On a set of data for which the true values. For which the true values are known. ओके कौन सा डेटा ट्रू है कौन सा फॉल्स है वो पता होने के बाद वी डिराइव कंफ्यूजन मैट्रिक्स okay it helps in understanding the performance of a classification model by breaking down the types of correct and incorrect prediction okay अब ये होता कैसे एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स का ड्रॉ करते हैं लेट अस ड्रॉ द टेबल ओके एक्चुअल पॉजिटिव या यू कैन से ट्रू पॉजिटिव एक्चुअल नहीं यू राइट इट ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव उसके बाद क्या प्रेडिक्टेड पॉजिटिव प्रेडिक्टेड नेगेटिव ओके
आप ये क्या किया, ट्रू पॉजिटिव को टीपी लिखो, ट्रू नेगेटिव को टीएन लिखो। जैसे ये ट्रू पॉजिटिव है तो ट्रू एक नेगेटिव भी होगा, सॉरी ये वाला फॉल्स, वन वन सेकंड। ट्रू पॉजिटिव तो ये होगा ट्रू, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव। अब ये ट्रू पॉजिटिव है तो यहाँ पे लिखो ट्रू नेगेटिव, या फॉल्स पॉजिटिव है तो फॉल्स नेगेटिव। ओके, ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव दिस इज ओके, बट फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव कहीं यूज होता है, कहीं मीन्स इट, ये जो है दिस इज, ये कहाँ पे यूज होते हैं, ये जो फॉल्स पॉजिटिव है ये कहाँ यूज होते हैं, यूज्ड इन प्रेडिक्टिंग spam in email or to find credit card non payment, जो पेमेंट नहीं किया यूजर्स, इसको डिटेक्ट करने के लिए हम फॉल्स पॉजिटिव यूज करते हैं। और फॉल्स नेगेटिव क्या करते हैं, फॉल्स नेगेटिव आइए बताऊं कैसे, यूज्ड इन मेडिकल सिस्टम्स। व्हेन देयर इज कोविड ना, तो बार बार ये फॉल्स नेगेटिव की बातें कर रहा था, फॉल्स नेगेटिव। तो विल बी डिस्कसिंग दिस। फॉल्स पॉजिटिव में होता क्या है, जैसे फॉल्स पॉजिटिव में सपोज, ओके, we consider that this is a the mail is spam, we consider it that mail is a spam but actually it is not spam, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉल्स पॉजिटिव यूज करते हैं। अंडरस्टूड, तो इट इज नॉट दैट डेंजरस, लेकिन यहाँ इट इज डेंजरस, इट इज डेंजरस, इट इज डेंजरस, इट इज डेंजरस। व्हाई फॉल्स नेगेटिव इज डेंजरस, क्या होता है, सपोज समवन हैज ए कैंसर, यू कैन गिव दिस इन एग्जांपल आल्सो इन एग्जामिनेशन हॉल। सपोज ए पर्सन इज हैविंग कैंसर, अब जब उसका टेस्ट हुआ, टेस्ट होने के बाद इट द रिजल्ट इज दैट दैट पर्सन हैज नो हैज डू नॉट डज नॉट हैव ए कैंसर, तो नेगेटिव, जो टेस्ट आया टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव हुआ, ओके, टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव हुआ, टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव हुआ, बट दैट इज फॉल्स, दैट इज फॉल्स मतलब क्या, टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आया लेकिन एक्चुअली दैट इज फॉल्स, उसका मतलब क्या, उस बंदे को क्या है, उस बंदे को कैंसर है। तो उस जगह में हम क्या करते हैं, ये वाला यूज करते हैं, फॉल्स नेगेटिव चीज यूज करते हैं, फॉल्स नेगेटिव, इट इज वेरी डेंजरस। ओके, यूज्ड इन मेडिकल सिस्टम्स। अंडरस्टूड, फॉल्स पॉजिटिव कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। सपोज किसी को पॉजिटिव बोला गया, जब मीन्स सपोज क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, मैंने क्रेडिट कार्ड में उसने बिल पेमेंट नहीं किया, सपोज समबडी इज कंसीडर बट दैट इज फॉल्स, ओके, बट दैट इज फॉल्स, तो इट्स ओके, वो कुछ हार्म नहीं करेगा उस बंदे को। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें बंदे का जान भी जा सकता है, इट इज डेंजरस। तो इन द मेडिकल सिस्टम्स वी यूज फॉल्स नेगेटिव। तो आई होप यू अंडरस्टूड दैट व्हाट इज दैट फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव। और ट्रू पॉजिटिव मतलब क्या, प्रू है पॉजिटिव है एंड दैट इज ट्रू, ट्रू नेगेटिव मतलब नेगेटिव है एंड दैट इज ट्रू, दैट इज ऑल। ये टीपी इज ट्रू पॉजिटिव, लेट मी टेक वन शीट। One sec. Let me take one more sheet. अब TP is for true positive. Let me write it. TP true positive. TN true negative. FP false positive. FN false negative. ओके, ये तो हो गए। अब हम लोग कुछ फॉर्मूलाज है दैट वी शुड नो। एक है एक्यूरेसी,
एक्यूरेसी, एक्यूरेसी। उसके बाद एक है प्रेसिशन, उसके बाद है सेंसिटिविटी, उसके बाद है स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी, उसके बाद है F1 स्कोर। Okay, so you have to know the formulas of everything. Okay, ट्रू पॉजिटिव एक्यूरेसी में क्या होता है? ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव अपॉन एवरीथिंग, जो भी है। क्या क्या है? ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, एवरीथिंग, दैट्स एक्यूरेसी। अब प्रेसिशन में क्या होते हैं? ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। सेंसिटिविटी में क्या होते हैं? ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। स्पेसिफिसिटी, व्हाट इज दिस? ये होता है ट्रू स्पेसिफिसिटी, ट्रू नेगेटिव अपॉन ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। देन F1 score, which is equal to 2 into precision into sensitivity upon precision plus sensitivity. This is the thing. अब एक्यूरेसी कहाँ यूज होते हैं? एक्यूरेसी, वी विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग्स। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को ACC में लिख देता हूँ। measures the overall correctness of the model। ये कितना करेक्ट है मेरा मॉडल। उसके बाद है प्रेसिशन, measures the accuracy of the accuracy of the positive prediction, then sensitivity, सेंसिटिविटी, इसको रिकॉल भी बोलते हैं, रिकॉल। ये क्या करते हैं? मेजर्स द एबिलिटी ऑफ द मॉडल, measures the ability of the model to capture all the relevant cases, Now specificity, measures the ability of the model, measures the ability of the model to avoid the false alarms, okay। so these are the things, hope इतना क्लियर हो गया। फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो क्लियर है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज न्यूरल नेटवर्क? हाउ biological neuron relates to artificial neuron, illustrates a suitable diagram that you can find it from the book and are able to map the components of the biological neuron with artificial neuron। ये कर लेते हैं, ठीक है। डायग्राम्स यू कैन फाइंड इट फ्रॉम द बुक, ओके, दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू। तो न्यूरल नेटवर्क क्या क्या है? इट इज ए कंप्यूटेशनल मॉडल। कैसे है? इट इज लाइक ए बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क, जैसे हम लोग का ह्यूमन ब्रेन है उसी तरीके से है। इट कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स
कॉमनली रेफर टू एज न्यूरॉन्स, नोड्स भी होता है जिसको न्यूरॉन बोलते हैं, ऑर्गेनाइज इनटू लेयर्स, अलग अलग लेयर्स होते हैं। दिस न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, इस तरह के, ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है, अंडरस्टूड। ऐसे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, इस तरह की। होप इतना क्लियर हो रहा है, इसी तरह की कुछ है, ठीक है। और यहाँ से इनपुट्स होंगे, ये अधिक ज्यादा इनपुट्स, ये इनपुट्स होते हैं, एंड दिस वन इज द आउटपुट। ओके, दिस इज द आउटपुट। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ न्यूरल नेटवर्क। ये कंप्यूटर साइंस में ऐसे न्यूरल नेटवर्क होते हैं। और ब्रेन पे भी इसी तरह से कनेक्शन होते हैं, इसी तरीके से कुछ कनेक्शन होते हैं, अंडरस्टूड। तो न्यूरल नेटवर्क को मैं थोड़ा डिफाइन करता हूँ, लेट्स डिफाइन द न्यूरल नेटवर्क। और न्यूरल नेटवर्क n slash n मैंने लिख दिया, is a computational model, is a computational model, is a computational model inspired by the biological neural network, inspired by biological neural network, biological neural network in the human brain, biological neural network. Okay, simple. It consists of interconnected nodes, जैसे मैंने इंटरकनेक्ट यहाँ पे किया हुआ है इस तरह की, ठीक है, इंटरकनेक्टेड नोड्स, interconnected nodes, commonly referred to as neurons, commonly referred to as neurons, commonly referred to as neurons, organized into layers, organized into layers, organized into layers, organized into layers. अब क्या करें, these neurons क्या था, process information and transmit signals to other neurons. These neurons process information, and transmit signals, to other neurons, allowing the network to learn and make predictions or classification. ओके, जो मैंने मशीन लर्निंग में जैसे क्लासिफिकेशन होता है कि रिग्रेशन मॉडल्स, वो सारे ऐसे ही हो जाते हैं। ये सिंपल इसी तरीके से, ये इससे आप, दिस इज, यू कैन से दिस इज डीप लर्निंग। इस सब्जेक्ट का हम बोल सकते हैं डीप लर्निंग, डीएल, डीप लर्निंग। ओके, अब क्या होते हैं, जैसे प्रेडिक्ट, एक होता है एएन, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इसको एएनएन बोलते हैं, एक होता है सीएनएन। अब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, क्लासिफिकेशन और प्रेडिक्शन के लिए यूज होता है, क्लासिफिकेशन और प्रेडिक्शन, यू कैन से। सीएनएन क्या होता है, एएनएन होता है आर्टिफिशियल न्यूरल, सीएनएन इज कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क यूज्ड फॉर इमेजेस, और एक होता है ट्रांसफॉर्मर्स, एक होता है अटेंशन मॉडल, एक होता है वीडियो, इमेज एंड वीडियो एंड इमेज कैप्शनिंग के लिए यूज होते हैं। और ये किस लिए यूज होते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हम एनएलपी यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स और एलएसटीएम यू कैन से, लार्ज एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी। ओके, एलएसटीएम्स यूज करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए। और जैसे आप क्या कर रहे हो, सपोज यू आर राइटिंग समथिंग, तो या आगे का 4-5 वर्ड वो बोल देते हैं, तो प्रेडिक्ट कर लेते हैं, तो दिस इज थ्रू दिस ओनली, ट्रांसफॉर्म, एलएसटीएम एंड ट्रांसफॉर्मर्स, अंडरस्टूड। अटेंशन मॉडल वीडियो और इमेज कैप्शनिंग के लिए यूज होते हैं,
अंडरस्टूड. तो CNN किस लिए होता है? यूज फॉर इमेजेस, एंड ANN इज क्लासिफिकेशन एंड प्रेडिक्शन मॉडल. तो होता क्या है, क्लासिफिकेशन हो या प्रेडिक्शन हो, पहले इंफॉर्मेशन यहां से जाते हैं, प्रोसेस करने के इधर जाते इधर जाते इधर जाते, यहाँ पे आउटपुट आता है. तो आउटपुट जो आएंगे, आउटपुट और जो जो प्रेडिक्टेड आउटपुट होगा, प्रेडिक्टेड आउटपुट, और एक होता है एक्चुअल आउटपुट. जब ट्रेनिंग होते हैं एक्चुअल आउटपुट, दोनों में डिफरेंस होंगे. तो फिर क्या होगा, यहाँ से बैक ट्रैकिंग होंगे, बैक ट्रैकिंग होंगे, फिर जाएंगे इंफॉर्मेशन. ओके, फिर यहाँ से स्टार्ट होंगे ऑटोमेटिकली. यहाँ बैक ट्रैक हो जाएगा अनलेस द प्रेडिक्टेड और एक्चुअल आउटपुट का जो डिफरेंस है मिनिमाइज ना हो, तब तक क्या होगा, इट विल गो ऑन एंड ऑन. बैकवर्ड होगा, फिर फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड होगा, इस तरीके से चलते हैं. फॉरवर्ड होते जाएंगे, फिर क्या होगा, डिफरेंस देखेंगे, प्रेडिक्टेड और एक्चुअल आउटपुट का डिफरेंस काफी है, लेकिन बैकवर्ड बैकवर्ड में चलेंगे. वेट्स को क्या किया जाएगा, वेट्स को चेंज किया जाएगा, वेट्स को चेंज किया जाएगा. तो विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस, डू नॉट वरी अबाउट इट. कि उतना डिटेल में हम जा नहीं रहे एक्चुअली, दैट्स द थिंग. अब जाके थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ क्या वेट होता है, क्या होता है, बायोलॉजिकल न्यूरल से अब कंप्यूट करता हूँ. ओके, सेल बॉडी, जैसे सेल बॉडी होता है बायोलॉजी में, सेल बॉडी, ये बायो का बात कर रहे हैं, और इधर क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल न्यूरॉन कंपोनेंट. सेल बॉडी, सेल बॉडी क्या बोलते हैं, सोमा, SOM में सोमा. और आर्टिफिशियल न्यूरल कंपोनेंट क्या बोलते हैं, इनपुट फीचर, इनपुट फीचर, इसको क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस, साइनेप्सिस. ओके, वैसे होता है डेंड्राइट. डेंड्राइट, डेंड्राइट को क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं. ओके, एक होता है एक्सन, इसको क्या बोलते हैं, समेशन फंक्शन. एक होता है एक्सोन टर्मिनल, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन फंक्शन. उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन बोलते हैं. ओके, अब क्या होते हैं, वेट्स क्या है. ओके, इनपुट फीचर्स क्या है, क्या होता है, इनपुट फीचर्स क्या होते हैं, इनपुट फीचर मतलब इनपुट जो आते हैं, दैट विल रिसीव द इनपुट सिग्नल, सिंपल. वेट क्या होता है, वेट इंपॉर्टेंस ऑफ इनपुट सिग्नल, एक वैल्यू होते हैं, दैट हम लोग क्या करते हैं, वी गिव द वेट्स, वी गिव द वेट्स, हम वेट खुद दे डालते हैं, ठीक है. तो उसके बाद क्या होता है, समेशन फंक्शन होते हैं. उसके बाद क्या होता है, एक्टिवेशन फंक्शन. दीज आर द थिंग्स. अब क्या होता है इसमें, थोड़ा सा मैं डिटेल में चलता हूँ. इन अ न्यूरल नेटवर्क, लेट मी राइट इट, इन अ न्यूरल नेटवर्क, in a neural network, layers of the artificial neurons, layers of the artificial neurons, AN लिख दिया मैंने, are interconnected. Layers of the okay, the artificial neurons interconnected, forming a network, forming a network, forming a network that can learn and make predictions, and can make predictions. The weights in the artificial network, the weights in the artificial neurons are adjusted, are adjusted during the learning process, during the learning process, during the learning process. Okay, the activation function, the activation function in artificial neural models, the activation function in artificial neural models, artificial neural models, models, in artificial neural, firing the threshold. Okay,
The activation function in activation artificial neurons act as act as firing threshold. फायरिंग थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड मतलब एक 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 लिमिट दिया हो, उस लिमिट के आगे नहीं जाएंगे, वैल्यू थ्रेशोल्ड। ओके, दिस इज द थिंग। तो क्या होता है दिस ये एक दिस इज द वे इट वर्क्स एक्चुअली, दिस इज द वे इट वर्क्स। तो होप आप लोग को मीन्स व्हाट मैं इफ आई गो इनटू द डिटेल्स ना, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, आई एम नॉट गोइंग इनटू द details. Okay, so whatever is required for the examination or for the revision, so you can go through it. If you want to go through the details, so it's something different, that I can teach. If you all demand, I can teach you later on, okay, after the examinations. Next question is explain Turing test with the help of block diagram. Also discuss block diagram, आपको book में मिल जाएंगे, okay, I am not discussing that. Also discuss Chinese room test as criticism to Turing test. Okay, what is a Turing test? This is the thing, na? What is a Turing test? Turing test. Suppose, listen to me. अब आप लोग को you can write it in your copy. I'm not writing. Okay. एक human judge है that is sitting outside the room and there are two rooms. Okay. In one room a human being is एक बंदा, कोई भी एक living being बैठा हुआ है जो टेस्ट दे रहा है, और in the other room a computer is taking the test. Okay. One human being and one computer is taking test in Turing test. Okay. One human being and one computer are taking test. Okay, and there is a human judge sitting in a third room. उन्हें पता नहीं है, ह्यूमन जज को पता नहीं है कि किस रूम में कौन है, ठीक है, कौन सा रूम में कंप्यूटर है और कौन सा रूम में एक इंसान बैठा हुआ है, that doesn't know, the human judge doesn't know. Okay, now when the test is going on, okay, after the result, when the results are coming na, तो the human judge cannot डिफरेंशिएट किस रूम में ह्यूमन बीइंग बैठा हुआ, किस रूम में कंप्यूटर बैठा हुआ, इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश. यदि if the human judge cannot distinguish between the human being and the computer, that means the computer is intelligent as human being. Understood? That's what Turing test is saying. In Turing test it is said. Understood? यदि if the human judge cannot distinguish between human and computer after result, then Turing test says that the machine or computer is as intelligent as the human being, यही है ट्यूरिंग टेस्ट. क्लियर? आप बीच में चाइनीज वाले बंदे आ गए. ओके, वो क्या बोलते, वो हम ये नहीं मानते, ठीक है, हम नहीं मानते. whatever it does, ठीक है, whatever the human or the computer is taking the test, ठीक है, and the results are almost similar, it cannot distinguish. That doesn't mean that the computer is as intelligent as the human being. Human being तो dumb भी हो सकते हैं, it can be ना, human being is dumb, human being is very intelligent, ठीक है. human being के अंदर ये consciousness है, इट कैन कॉन्शियसनेस, उसके अंदर फीलिंग है, मशीन के अंदर कोई फीलिंग नहीं है. तो हाउ कैन यू से दैट इट इज सेम इंटेलिजेंट एज द ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग पेपर देने गए, एग्जाम देने गए, उसका माइंड ठीक नहीं है, कुछ सिचुएशन हो गया, इट हैपेंस, बट देयर इज नो फीलिंग. ह्यूमन बीइंग के अंदर जो फील है, दैट फीलिंग इज नॉट देयर. दैट्स व्हाट चाइनीज सेज. ओके, तो ये टेस्ट क्या बोलते हैं, टेस्ट में क्या होते हैं,
Okay, consciousness. Chinese, what Chinese says? Chinese, Chinese test, Chinese रूम टेस्ट, वो क्या बोलते हैं? वो क्या बोलते हैं? नो कॉन्शियस, नो कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, ओके, नो कॉन्शियसनेस। आप किस तरह से कॉन्शियस नहीं? इसमें क्या करते हैं? इसमें ये क्या करता है? द थॉट एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व ए पर्सन है, ए पर्सन इन्वॉल्व्स ए पर्सन इन ए क्लोज रूम, ठीक है, हु रिसीव्स चाइनीज कैरेक्टर्स थ्रू ए स्लॉट। चाइनीज कैरेक्टर्स दिया जाता है, फॉलोज इंस्ट्रक्शंस इन रूल बुक, रूल बुक में देखते हैं और चाइनीज कैरेक्टर्स को अंडरस्टैंड द चाइनीज कैरेक्टर, ओके, एंड प्रोड्यूसेस चाइनीज कैरेक्टर एज आउटपुट। So what is the meaning of the Chinese character? He has no knowledge about the Chinese character without understanding the meaning of the conversation. वो क्या करते हैं? वो बुक देखते हैं, बुक से कन्वर्ट करते हैं और ये करते हैं। अंडरस्टूड? तो उसका मतलब ये नहीं जो मीन्स चाइनीज वो जो बंदा उसके अंदर या सिस्टम कंप्यूटर जो बैठे हुए हैं, या इट इज वेरी इंटेलिजेंट। अंडरस्टूड? विदाउट अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग, इट सिंपली गिव्स द रिप्लाई। अंडरस्टूड? इट सिंपली गिव्स द रिप्लाई। एग्जांपल ले लो, एक बॉट है, बॉट को you wrote that some mishappening has happened in our home, please don't mind, okay, best example, mishappening, so I cannot pay the payment today is the last day but I cannot pay. Would that chatbot understand? It has no consciousness, but human being होने से क्या हो गया? ओके, मैं सीनियर से बात कर लेता हूँ, ठीक है सर आप एक दिन ये कर लो, इस तरह कुछ बातें होते हैं, लेकिन क्या होता है? बॉट बोलता है आई कैनॉट अंडरस्टैंड, ओके, यू हैव टू पे टुडे। that doesn't mean that machine is intelligent. तो चाइनीज इन्वेंटर्स क्या बोलते हैं? चाइनीज क्या बोलते हैं? चाइनीज यही बोलते हैं जब इट इज नॉट इंटेलिजेंट बिकॉज इट हैज नो कॉन्शियसनेस, सिंपल, दैट्स द थिंग। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रीफली डिस्कस द फॉलोइंग विद सुटेबल एग्जांपल फॉर इच। रूल बेस्ड मशीन लर्निंग, बेसियन एल्गोरिथम, डिसीजन ट्रीज, डाइमेंशन रिडक्शन। अब रूल बेस्ड मशीन लर्निंग क्या होते हैं? मतलब इट इन्वॉल्व्स ए मॉडल दैट मेक्स डिसीजंस। रूल बेस्ड लर्निंग, ये फर्स्ट वाला कर रहा हूं। It involves a model. It involves a model. It involves a model that make decisions. Decisions by following a set of by following a set of by following a set of predefined rules. It involves a model that makes decisions by following a set of predefined rules. Okay, that is rule based learning. Simple example ले लो। Rule 1, if the animal has feathers, animal has feathers, it is a bird. Rule 2, if the animal has fur, if the animal has fur and says meow, it's a then it's a cat. इसी रूल्स पे बेस पे यदि कोई मैं मशीन मॉडल क्रिएट करूं तो क्या होगा? इट विल डिटेक्ट ए बर्ड, इट विल डिटेक्ट ए कैट, ओके, अदर देन दैट कुछ भी वो नहीं कर पाएगा। तो दैट इज रूल बेस्ड मशीन लर्निंग। इज इट क्लियर? सेकंड इज बेसियन लर्निंग। सेकंड इज बेसियन लर्निंग। Second is Bayesian learning. Now, second is Bayesian algorithm. Bayesian. Bayesian algorithm. Okay, it is based on Bayes theorem. Simple. It is based on, हमने statistics में पढ़े तो what is Bayes theorem? तो it based on that. It is based on Bayes theorem. It is based on Bayes theorem.
and it uses probability to make, and it uses probability probability to make predictions or decisions. Predictions or decisions. Okay. होप इतना क्लियर है. एग्जाम्पल ले लो. Let's take an example to understand the thing. Just take an example. Suppose in spam email filtering, spam होते हैं emails में, you all know about it. Email filtering Bayesian can be used. इसमें क्या होता है, algorithm calculates the probability that an email is spam or not. Okay, Bayesian the algorithm क्या करते हैं, check करते हैं probability spam or not based on the occurrence of certain words. कुछ words होते हैं, हाँ, okay, कुछ words से वो क्या करते हैं, check करते हैं it is spam or not. If an email contains words frequently associated with spam, spam में जो जो word है वो यदि associated है उस email में, तो the algorithm adjusts the probability accordingly and it says the spam is the email is has it's a spam email, simple. तो उसके लिए हम यूज करते हैं बेजियन एल्गोरिथम. तो ये आप लोग लिख सकते हो. ये एक बार फिर मैं बोलता हूँ, ये स्पैम ईमेल फिल्टरिंग में यूज होते हैं. स्पैम ईमेल फिल्टरिंग, स्पैम ईमेल फिल्टरिंग में यूज होते हैं. ठीक है, बेजियन एल्गोरिथम. इसमें क्या करता है, इट द एल्गोरिथम कैलकुलेट्स द एल्गोरिथम कैलकुलेट्स the algorithm calculates the probability that the mail is spam or not, based on the occurrence of based on the occurrence of certain words. So if an email contains words frequently associated with the spam, the algorithm क्या करते हैं, automatically adjusts the probability and says it is spam. Okay, that's the thing. Then third is, let me see what is the third. Third is the decision tree. Third is decision tree. Decision tree में क्या होता है? These are type of model used for both classification regression. ये used for both. First of all ये use देख लेते हैं. Used for both classification and regression. Used for both classification and regression. Okay. They involve क्या होता है, recursively partitioning the data into subsets based on the most significant attribute at each step. मतलब क्या होता है इसमें बार बार ये रिकर्सिवली हम पार्टीशन करेंगे डेटा को. अंडरस्टूड. डिसीजन ट्री यही है डिसीजन ट्री. अब एग्जांपल ले लो. एग्जांपल ले लो. If the weather is sunny, decision 1. If the weather is sunny, go to decision 2. Let me take the example. Decision 1. If the weather is sunny, if the weather is sunny, go to decision 2. Go to decision 2. If not, don't play. If not, sunny नहीं है तो if not, don't play. Simple. Okay. अब decision 2. Weather is sunny तो है. Weather is sunny तो है. If the humidity is high, if the humidity is high, don't play. Don't play. Don't play. If not,
यदि ह्यूमिडिटी हाई नहीं है, इफ नॉट प्ले, सिंपल। तो इस तरह का एक ट्री बन जाएगा, अंडरस्टूड। इफ द वेदर इज सनी, गो टू डिसीजन टू। अब हाँ, ओके। जैसे किस तरह के देखते हैं। कैसे लिखे? प्ले, प्ले और नॉट प्ले, ये दोनों ही हो सकते हैं। वेदर सनी, वेदर सनी, सनी तो क्या बोला? गो टू डिसीजन टू। डिसीजन टू क्या है? इफ द ह्यूमिडिटी है हाई, ह्यूमिडिटी और नॉट ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी इज हाई, हाई, यस, तो डोंट प्ले, डोंट प्ले। इफ नो, प्ले, सिंपल। वेदर सनी, वेदर सनी नहीं है, मतलब क्या, क्लाउडी है, नो, तो क्या होगा? सिंपल, डोंट प्ले, डोंट प्ले, अंडरस्टूड। तो इस तरह का ट्री बन जाएगा, अंडरस्टूड। प्ले, वेदर सनी, ठीक है, वेदर सनी यस, यस है, तो यदि वेदर सनी यस है तो क्या होगा? ह्यूमिडिटी हाई और ह्यूमिडिटी लो, ह्यूमिडिटी हाई यस, तो डोंट प्ले। ह्यूमिडिटी इज नॉट हाई, नो, तो क्या होगा? प्ले। इफ वेदर इज नॉट सनी, तो क्या होगा? नो है, नो है मतलब क्या होगा? मतलब क्लाउडी है, तो डोंट प्ले। तो इस तरह का कोई एक ट्री फॉर्मेशन हो जाएगा, अंडरस्टूड। यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ दिस आल्सो। फोर्थ इज, लेट मी से, fourth is dimensionality reduction. Dimensionality reduction. Dimensionality reduction, इसमें क्या होता है? It aims to reduce the number of features. It aims to reduce the number of features in a data set. In a data set, while retaining, while retaining its essential information. Its essential information. Essential information. Understood? क्या कहते हैं? Reduce the number of features. Example ले लेते हैं. Let us take an example. Let me take one more sheet. Example ले लो. Employee, एक टेबल है, यहाँ पर नेम है, उसके बाद डिपार्टमेंट है, मोबाइल नंबर 1, मोबाइल 1, मोबाइल 2, मोबाइल 3, 3 मोबाइल नंबर है, स्लैश, ऐसे करके नेम में क्या होगा? फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी हो सकते हैं। तो क्या होता है? हाँ, तो नेम, डिपार्टमेंट, मोबाइल 1, मोबाइल 2, मोबाइल 3। तो मोबाइल 1 जो है, मोबाइल 2 जो है, यदि एक दो फीचर यदि मैं हटा दूं, if I remove these two features, so would that affect this table? It won't affect the table. Information will be same. Understood? If I remove these two mobile numbers, mobile 2, mobile 3, a person has two mobile numbers these days. Okay, जैसे suppose 3 मोबाइल नंबर है, 2 मोबाइल नंबर, यदि मैं 2 मोबाइल नंबर का टेबल यदि if I remove it, तो would that affect the table? It won't affect the table. तो क्या करें? Automatically you have reduced the dimension also, reduce the number of features also. So this is what it's saying. Okay. अब ये होते जो डायमेंशन रिडक्शन करने के लिए हम व्हाट वी यूज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस फॉर डायमेंशन रिडक्शन। पीसीए लिख देता हूँ, पीसीए इज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस is a common dimension reduction method, is a dimension is a common dimension
रिडक्शन मेथड। जैसे कोरिलेटेड डेटा होते हैं, कोरिलेटेड फीचर्स, तो क्या करते हैं, कोरिलेटेड फीचर्स में बहुत सारे फीचर, कोरिलेटेड फीचर को हम डिलीट कर देते हैं। अंडरस्टूड? इट व्हाट हैपेंस इन अ डेटा सेट, in a data set in a data set with multiple correlated features, with multiple correlated correlated features, multiple correlated features, PCA identifies the principal components, the principal components components which are linear combination, which are linear combination of which are linear combination of the original features okay, so which are original features. These components capture these components. I'll give an example, do not worry. These components capture the maximum variance in the data. Example ले लो, let us take an example. In facial recognition, PCA can help reduce the dimension of the image data. Okay, कैसे? Important facial features को रखेंगे, बाकी सारे वो remove कर देते हैं. Understood? Example ले लो. In facial recognition, PCA reduces the dimensionality of the image data, reduces the dimension of the image data while preserving important facial features, अंडरस्टूड? कान के देखिए या टू आईज के बीच में कितनी कितनी गैप है, नोज कितना बड़ा है, उस तरह के कुछ दो चार फीचर्स रखेंगे, बाकी सारे फीचर्स को हटा देंगे. उससे इट कैन ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्ट द इमेज, इट कैन ऑल्सो कंस्ट्रक्ट द इमेज. तो दैट कैन बी डन थ्रू PCA. अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय स्टेट स्पेस सर्च. वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज क्या? इट इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक. स्टेट स्पेस सर्च क्या है? इट इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक. इट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक. कैसे? एग्जाम्पल ले लो, मीन्स सपोज यू हैव ए ये ले लो चेस. ओके, चेस में सारे मूव्स आपको पता है, तो वॉट एवर द मूव्स यू कैन डू, लीगल मूव्स, तो वो सारे क्या है? दोज आर ऑल स्टेट स्पेस यू कैन से. ओके, वो जो सारे मूव्स है, ओके, उसी मूव के थ्रू से यू कैन थ्रू द मूव्स यू कैन प्ले द गेम. अंडरस्टूड? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना. अंडरस्टूड? तो दिस इज द स्टेट आई एम टेलिंग यू, एंड विद इन दैट स्पेस कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशंस को कंस्ट्रेंट्स यू कैन से, कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करके आपको आगे जाना है, तो दैट इज स्टेट स्पेस. अंडरस्टूड? एंड यू हैव टू सर्च द स्पेस आल्सो, द बेस्ट स्पेस. यहां पे क्या होता है? यूज्ड इन AI. इसमें स्टेट क्या होता है? लेट मी राइट द स्टेट. It is a specific configuration. It is a specific configuration. It is a specific configuration or snapshot of a system. Snapshot of a system.
of system of a system at a given point in time, at a given point in time. Okay. It defines the entire scope of, हाँ, okay, understood. तो मैंने एक पॉइंट में किस जगह में हो, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज स्टेट, सिंपल. और स्टेट स्पेस, स्टेट स्पेस, स्टेट स्पेस क्या होता है? इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्टेट्स. इट इज द सेट, इट इज द स्पेस ऑफ all, it is the set of all possible states that a system can be in, that a system can be in. Okay, उससे बाहर नहीं, बाय रूल्स. जैसे 8 into 8 64 जो बोर्ड है, 64 बोर्ड में कहीं भी हो सकता है. अंडरस्टूड, दैट इज अ स्टेट स्पेस, सिंपल. Third is search space. Search space, एक search space है. The search space is subset. The search space is a subset. The search space is a subset of the state space. Of the state space that is explored. That is explored during the search process. During the search process. Number 4th, operations or actions. Operation or action, ये क्या है? Are allowable moves. Are allowable moves or transformations. Transformations that can be applied to transition. That can be applied to transition. To transition from one state to another. Do not relatively write it write properly. Then I will explain again. 5th is initial state. जहां से स्टार्ट होंगे. ओके, प्रॉपर स्टार्टिंग पॉइंट इन द सर्च स्पेस. स्टार्टिंग पॉइंट in the search space. Search space. Goal state. Goal state. Goal state में क्या होता है? Here the search terminates. When the goal is found, the search terminates. Okay. Now let me discuss everything again. State क्या होते हैं? It is a specific configuration or snapshot of a system. कोई भी एक जगह में, जैसा there is a elephant, or there is a I am talking about the chess, or there is pawns. Okay, there is the king, there is the queen. जिस जगह में है, कोई भी एक जगह है, so that is at a given point in time. जिस जगह में वो कोई भी एक फिगर है, so that is the state. Okay. Number 2 is state. It is a specific configuration or snapshot. ये तो हो गया. Number 1 is state. Number 2 is state space. It is the state space क्या है? All possible possible searches, you can say. All possible searches. All possible moves, you can say. That is state space. सर्च स्पेस क्या होता है? अभी एक पोजीशन में मैं हूं बोर्ड में, गेम इज गोइंग, गेम चल रहे एट अ पॉइंट. ठीक है, तो आप मुझे कौन कौन सा मूव ले सकता हूं, दैट इज सर्च स्पेस. तो इट इज ए सबसेट ऑफ स्टेट स्पेस ओनली. अंडरस्टूड. ऑपरेशन और एक्शन क्या होते हैं?
इट इज द अलाउबल मूव्स, सिंपल, दैट इज ऑपरेशन और एक्शन. इनिशियल स्टेट क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, और गोल स्टेट क्या होता है, व्हेन द गोल इज फाउंड, जब मैं व्हेनेवर द ओपोनेंट लूज द सर्च टर्मिनेट्स, उसके बाद कुछ नहीं, एव ओवर, दिस इज ऑल. ओके, अब एक क्वेश्चन आ गया. ओके, enter the state space representation of water jug problem given below. Okay, given below. Given two given two jugs of 5 gallons and 3 gallons, both of which do not have measuring indicator on them. The jugs can be filled with water with the help of any pump, any number of times. The question is, how can you get 4 gallons of water? Simple. How can you get 4 gallons of water? So how can I find out? तो ये हो गया ना ट्रिकी क्वेश्चन. तो हाउ टू डू, ये तो सोचने वाली क्वेश्चन है. हाउ टू डू दिस, व्हाट टू डू जग प्रॉब्लम में, व्हाट विल डू. चल करते. मैं क्या करूंगा, फिल द 3 गैलन जग कंप्लीटली. फिल द 3 गैलन जग completely. Number 2, pour the water. एक मिनट, 3 गैलन जग ले लिए. fill water. Number 2, fill water from 3 gallon jug. Pour water from 3 gallon jug into the 5 gallon jug. Into 5 gallon jug. Okay. Until the 5 gallon jug. Until the 5 gallon jug. Until the 5 gallon जग इज फुल. क्लियर हो रही बात. 5 गैलन जग फुल हो गए, मतलब क्या होगा, 3 गैलन से 2 बार मुझे करना पड़ेगा, 3 और नेक्स्ट 3 लीटर मैंने ले लिए, 3 लीटर डाल दिए. ओके, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, 3 लीटर गैलन में डाल लिए. उसके बाद फिर मैं कितने लीटर डाल सकता हूँ, 2 लीटर डाल सकता हूँ. इज इट क्लियर. ओके, तो 2 लीटर डाल सकता हूँ. 3 गैलन जग है, 3 गैलन जग मैंने डाल दिया, तो 0 हो गया इधर, 3 गैलन, 3 और यहाँ पे 5. एक बार 3 डाल दिए तो 3 हो गए. उसके बाद फिर 3 डालोगे, 3 तो डाल ही सकते हो, 2 डाल सकते हो. ओके, तो 5 हो गए. तो यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे कितने जग रह गए, 2 और 3 5 हो गया, तो यहाँ पे 1 लीटर रह गया. अंडरस्टूड. क्योंकि फर्स्ट टाइम में मैंने यहाँ पे 3 लीटर डाला, फिर मैंने 2 लीटर डाले, ये 5 लीटर फुल हो गया. इज इट क्लियर. नंबर 3, 5 लीटर जग है, 5 लीटर मैंने 3 लीटर पहले डाल दिया, 3 लीटर चला गया. ओके, फिर मैं फिर 3 लीटर पानी ले लिए, इसमें डाले जब, तो 2 लीटर ही डालेंगे ना, बिकॉज 5 लीटर, 3 + 2 5, तो 1 लीटर यहाँ पे बच गए. इज इट क्लियर. तो क्या हो गया, अब एम्प्टी द 5 लीटर जग, एम्प्टी द 5 लीटर जग. यहाँ पे कितना है, 1 लीटर 3 लीटर में, और यहाँ पे क्या एम्प्टी है, 5 लीटर में क्या है, एम्प्टी. इज इट क्लियर. उसके बाद क्या करेंगे, नंबर 4, फिल 1 लीटर, पोर लिखो, पोर 1 लीटर इंटू 5 लीटर जग, इंटू 5 लीटर जग. इतना तो कर सकता हूं. तो क्या हो गया, 3 लीटर क्या हो गया, ये क्या हो, 3 लीटर वाला क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, क्योंकि 1 लीटर मैंने कहां डाल दिया, इधर है, 5 लीटर में 1 लीटर है. इज इट क्लियर. एक लीटर इधर डाल दिए. 5th, तो अब क्या हुआ, अगेन फिल 3 लीटर जग. तो क्या हो गया, ये अभी 3 लीटर है, अब यहाँ पे 3 लीटर है, और यहाँ पे कितना है, 5 लीटर वाले में यहाँ पे 1 लीटर है. अब क्या करूं, 6th में
pour 3 लीटर इंटू 5 लीटर, pour 3 लीटर इंटू 5 लीटर। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 लीटर वाले में एम्प्टी हो गया, और ये 3 लीटर था, ये किधर डाल दिया, इधर डाल दिया, तो 1 + 3 कितना हो, 4 लीटर हो गए, 4 लीटर हो गए। तो यही तो पूछ रहे। Understood? How can you get 4 gallons of water in a 5 gallon jug? This is what it is asking, and we did it. This is the thing. So this is how we do it. Next question. We did a lot. अब आप लोग खुद ही करोगे। एक क्वेश्चन है, बाइनरी क्लासिफिकेशन, यू डू इट ऑन योर ओन। एंड अदर क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन ए स्टार, ए स्टार, डीएफएस, बीएफएस, ये सारे आप लोग खुद करोगे और मेरे लेक्चर से भी आप एक बार देख लीजिएगा। दैट्स ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।